So nation is a community of people formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture, and society. Nation is not a built but a felt entity. Okay? But the intensity of attachment to it varies across nations depending upon the degree of nationness. As is well known, some nations are well integrated and others are loosely knit. And it is said that nations which are more culturally diverse have lesser chances of being integrated. But our country, India, is an exception. In spite of the diversity of cultures that India fosters, there is an underlying thread of unity that unites the country into one whole. So coming to the next concept, culture. Culture is an umbrella term that covers a wide gamut of components such as attitudes, beliefs, languages, customs, rituals, behavior, faith and religion, food, art, drama and music, and so on. In a nutshell, culture is a broad term that encompasses beliefs, values, norms, behaviors, and overall can be understood as a way of being or a way of living. कल्चर को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जीवन जीने की जो पद्धति है, जीवन जीने का जो तरीका है, वही संस्कृति है. Culture is an essential component of each and every society. It is the fabric that weaves communities together and gives them their unique identity. Now, coming to the third important concept that features in the title, and the most important one, cultural diversity. Cultural diversity acknowledges the existence of cultural groups within a culture. Cultural diversity includes diversities in language, in race, ethnicity, dress, values, religion and religious practices, social and community responsibilities, political views, and so on. Someone has very beautifully defined cultural diversity through an acronym that reads, different individuals valuing each other regardless of skin, intellect, talents, or years. Now, talking about India's cultural diversity. In India, there is an amazing cultural diversity throughout the country, and almost every state of India has carved its own cultural niche. हम सभी ने बचपन में एक गीत बड़े गर्व के साथ गुनगुनाया होगा. मुझे उम्मीद है आप सभी ने कभी न कभी जरूर ये गीत गाया होगा, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता एवं संपन्नता को बखूबी परिलक्षित करता है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है. So this song, this geet beautifully brings out cultural diversity of India. In India, there are diverse customs, traditions, rituals, faith and festivals, cuisine, attire, morals and values, languages, and so on. Okay, taking example of just languages, India is home to nearly 398 dialects. और भारत की बोलियों के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, यहाँ कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी. As we travel in India from one corner to another, not only does the taste of water change, but so does the taste of tongue. The cuisine map of India can leave anyone awestruck. पंजाब के मक्के की रोटी और सरसों का साग हो या राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, गुजरात का ढोकला हो या महाराष्ट्र का श्रीखंड, दक्षिण भारत का इडली डोसा सांभर हो या बिहार का लिट्टी चोखा, बंगाल का रसगुल्ला हो या फिर उत्तर प्रदेश का बनारसी चाट. भोजन की इतनी विविधता समूचे ब्रह्मांड में शायद ही कहीं देखने को मिलती हो. And
In spite of this humongous diversity of cultures in India, there is a common thread that unites India into one. And therefore, India has often been addressed as a salad bowl. To explain the metaphor of salad bowl, a salad bowl is a metaphor used to describe the manner whereby a multicultural society aims to integrate different cultures while maintaining their separate identities. अगर हम इसको विज्ञान के मेटाफर में एक्सप्लेन करें, तो भारत में जो सभ्यताएं हैं, अलग अलग तरह की जो संस्कृतियां हैं, वो एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है, जिसमें वो एक होते हुए भी अपना जो मूल अस्तित्व है, अपनी जो मूल पहचान है, उसको बनाए रखती है. दिस आइडिया कॉन्ट्रास्ट विद द नोशन ऑफ मेल्टिंग पॉट, which emphasizes the combination of different groups to create a single nation. Now, देखिए, जब हम बात करते हैं बहुसंस्कृतिक देश की, तो जब इतनी अधिक संस्कृतियां होती है, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृतियों के बीच में कुछ तनाव, कुछ समस्याएं भी होती होगी. लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका पालन करते हुए एक बहुसांस्कृतिक देश अपनी अखंडता को बनाए रख सकता है. तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि बहुविध जो सांस्कृतिक देश है उसमें किसी तरह का कोई भेद ना हो, संस्कृतियों के बीच में कोई समस्या ना पैदा हो. तो हमें सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि एक से अधिक संस्कृतियों का अस्तित्व संभव है. और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सांस्कृतिक विविधता है, तो जाहिर है कि सांस्कृतिक भेद होंगे, परंतु इस विविधता, इस अंतर का आदर होना चाहिए. जिस तरह से एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से भिन्न होती है, तो उस चीज का हमें सम्मान करना है. सांस्कृतिक भेद को मन भेद का कारण हमें नहीं बनाना है, क्योंकि जब सांस्कृतिक भेद मन भेद का कारण बन जाते हैं, तो देश में बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है. यह स्वीकार करना भी नितांत आवश्यक है कि सभी सांस्कृतिक परंपराएं वैध है एवं उनका सौहार्दपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व संभव है. जैसा कि हम भारत में देखते आए हैं, शताब्दियों से अनेकों अनेक संस्कृतियां हैं जो सौहार्दपूर्ण तरीके से साथ साथ चली आ रही है, और भारत को एक विश्व गुरु बनाने में जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसलिए संस्कृति द्वारा प्रदत्त मूल्यों का सम्मान होना बहुत जरूरी है. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संस्कृति ने जो हमें मूल्य दिए हैं, हम उनका सम्मान करें, और साथ ही विविध सांस्कृतिक समूहों के सशक्तिकरण का प्रयास हमें करना चाहिए. जब हम एक बहुसंस्कृतिक देश के निवासी होते हैं, तो ये चीजें हमें अवश्य करनी है. और यह भी जरूरी है कि सांस्कृतिक विविधताओं को हम ना सिर्फ स्वीकार करें, बल्कि उनको अपने रहन सहन में, अपने जीवन में उतारें. और यकीन मानिए, निसंदेह ऐसा करने से हमारी जो स्वयं की संस्कृति है वो और अधिक संपन्न होगी, वो और अधिक परिष्कृत होगी, वो और अधिक निखरेगी. अब सवाल ये उठता है कि सांस्कृतिक जो भिन्नताएं हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके क्या फायदे होते हैं. सांस्कृतिक भिन्नता के बीच में जब हम रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्वतः ही हमारे पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो वैल्यू है, जो गुण है, वो है कंपैशन. Communication and understanding of differences leads to increased compassion instead of judgment. जब हम बहुत सारे अलग अलग संस्कृतियों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम जजमेंटल होने की बजाय हमारे अंदर इस तरह की सहनशीलता आ जाती है कि हम सभी सांस्कृतिक मूल्यों को, भिन्न भिन्न संस्कृतियों द्वारा प्रदत्त जो मूल्य हैं, हम उनको स्वीकार करना सीख जाते हैं. निश्चित तौर पे इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है. Because varied perspectives and lens of looking at world lead to innovative thinking. अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के नजरिए होते हैं, और जब हम इन नजरियों को देखते हैं, जब हमें मौका मिलता है ऐसे एक्सपोजर का, जहां पे बहुत सारी संस्कृतियां हैं, जहां बहुत सारे नजरिए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा जो चीजों को देखने का नजरिया है, उसमें भी ग्रोथ होता है, उसका भी एनहांसमेंट होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो है प्रोडक्टिविटी. People who come together and bring their own style of working together tend to support a more productive team. देखिए,
जब जैसे कि नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स की बात होती है, वैसे ही पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं। अलग अलग जो कम्युनिटीज होती हैं, कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, उनके कुछ गुण भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलोंगिंग टू हार्श टेरेन्स, हार्श फिजिकल टेरेन्स, जो माउंटेन्स में रहने वाले लोग हैं या डेजर्ट में रहने वाले लोग हैं, दे आर बिलीव टू बी मोर हार्ड वर्किंग। इसी तरीके से कुछ कल्चरल ग्रुप्स हैं, दे आर बिलीव टू हैव मोर आईक्यू, and similarly there are some cultural groups, you know, where people are very tall, जो बहुत अच्छी बास्केटबॉल टीम बना सकते हैं। तो कहीं कहीं हमको हाइट का बेनिफिट भी मिल सकता है जब हम एज अ टीम काम करते हैं। And similarly, there are groups in which the people are quite adventurous and risk-taking. Likewise, there are certain groups, cultural groups, you know, they plan so much on planning. So when you have a team coming from, which has people coming from different cultures, different cultural groups, having different cultural attributes, so when those people work as a team, definitely the output of that team is multiplied manyfold. Another important benefit of having cultural diversity is that it opens avenues to new opportunities. The diversity opens doors to new opportunities because, you know, the blending of ideas जो होता है बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोगों के आने से, वो एक होमोजीनियस ग्रुप में संभव नहीं है। और जब इतने सारे तरह के लोग आते हैं तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी एनहांस होती है, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर एंड चैलेंजेस, दे आर लेयर्ड, दे आर मल्टी लेयर्ड। सो व्हेन वी हैव मोर नंबर ऑफ पीपल, वी हैव मोर नंबर ऑफ ब्रेन्स वर्किंग ऑन देम, वी हैव मोर नंबर ऑफ आइडियाज कमिंग इन, and definitely richness of opinions, they definitely are better problem solving compared to you know, a single group. एंड इन सब का नतीजा क्या होता है कि जब हम इस तरह के कल्चरली डाइवर्स ग्रुप में काम करते हैं, डेफिनेटली इट एनकरेजेस ओपन माइंडेडनेस इन पीपल। सो कल्चरल डाइवर्सिटी, इट मेक्स अ सोसाइटी मोर इंटरेस्टिंग प्लेस टू लिव इन। अगर एक ही कल्चर होगा, सो इट वुड बी, यू नो, अ काइंड ऑफ होमोजीनियस थिंग, जो बहुत मोनोटोनस होगा, जो बहुत बोरिंग होगा। सो डिफरेंट कल्चर्स हैव देयर ओन बिलीव्स एंड इंटरेस्ट व्हिच दे कैन शेयर एंड ऑफर alternative ways of doing things. People from different cultures can give us different insights into food, language, music, art and literature, history, religion, and much more. And it is for this reason, it is for the benefits that I have enlisted, that UN has declared 21st May as World Day for Cultural Diversity. So every year, 21st of May is celebrated as World Day for Cultural Diversity. Now, coming to the most important part of the presentation, how cultural diversity plays a significant role in nation building. There are a variety of ways, there are different ways by which cultural diversity supports nation building. I think किसी का audio. Okay, thank you. So culture, the most important you know, role that it plays is cultural diversity is our shared human heritage. So cultural diversity is necessary for humankind as biodiversity is for nature. In this sense, it is the common heritage of humanity and should be recognized and affirmed for the benefit of present and future generations, says Universal Declaration of Cultural Diversity 2001. साझा सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परंपराएं एवं इमारतें मानव सभ्यता के समृद्ध इतिहास की अनकही गाथाएं हैं, अतः आपको और हमें मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सहेजना है, इन्हें संरक्षित करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो निसंदेह राष्ट्र निर्माण रूपी यज्ञ में आहुति देने का श्रेष्ठ कार्य करते हैं। और इस गुण के लिए सदैव पश्चिम ने भी हमें सराहा है। यू नो, in the work titled Wonder that India was,
A.L. Basham expresses that a common Egyptian, Greek, or Iraqi has no knowledge of the culture of his forefathers, and in each case, there has been almost a complete break with the past. On the contrary, India is a culture fully conscious of its own antiquity, a culture that has not fundamentally changed for many thousands of years. To this day, legends known to the humblest of Indians recall the names of the saints, chieftains, knowledge systems, and hymns composed 1,000 years before Christ. India has the oldest continuous cultural traditions in the world. Public memory has done justice to saints and seers who continue to be remembered through folk literature. Pick up folk literature of any region of India. There are folk songs and folk tales and folk narratives that narrate the exemplary stories of saints and seers. These stories, they not only remind us of our past glory, but they also inspire us to contribute our share in nation building. Second important, the important role that it plays is that cultural diversity fosters peace. Cultural diversity fosters peace, demanding respect for humans regardless of different traditions, histories, and customs. Today, it is not enough to ask for tolerance. To truly protect human rights, we must actively champion cultural diversity. और ये तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम यूएन की रिपोर्ट देखते हैं जो कहता है कि दुनिया के 1/3 से अधिक संघर्षों की जड़ में सांस्कृतिक कलह, सांस्कृतिक कलेश है। यानी दुनिया में होने वाले अधिकतर झगड़े संस्कृतियों की वजह से है। जब दो संस्कृतियां आपस में उनमें मतभेद पैदा होता है, मनभेद पैदा होता है, तो इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जब हम संस्कृतियों का सम्मान करेंगे, जो अपने से भिन्न है, उन संस्कृतियों का सम्मान करेंगे, तो दिलों के जो फासले हैं वो मिटेंगे और एक शांतिपूर्ण माहौल का सृजन होगा। और ऐसे में हमारी सारी चेतना, हमारी सारी ऊर्जा, all our energy and consciousness, it will be focused on nation building. हमारी सारी चेतना और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण पे केंद्रित हो जाएगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो सांस्कृतिक विविधता से होता है वो ये है कि जब हम विभिन्न संस्कृतियों के प्रति हम सहिष्णु हो जाते हैं, उनका आदर करना सीख जाते हैं, तो दुनिया में शांति स्थापित हो जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी सपोर्ट्स लोकल डेवलपमेंट, ये भी कल्चरल डाइवर्सिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। कल्चरल डाइवर्सिटी गिव्स आवर लाइफ अ रिचनेस, its color and its dynamism. It is a cognitive and intellectual opening and a driving force for social development and economic growth, advocates Audrey Azoulay, UNESCO Director General. किस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी लोकल डेवलपमेंट में सहायक है? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज cultural diversity is key to local sustainable development that can empower and lift communities out of poverty. Embracing and acknowledging cultural diversity can help in tailoring developmental goals according to the unique histories of each community, therefore providing customized solutions that are longer lasting and more impactful than one size fits all approaches. जब संस्कृतियां भिन्न भिन्न है तो उन संस्कृतियों की समस्याएं भी भिन्न भिन्न है। एक ही मॉडल, एक ही सॉल्यूशन सभी संस्कृतियों पे नहीं लगाया जा सकता। और जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सांस्कृतिक भिन्नताएं होती है, तो निश्चित तौर पे हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस लेके आएंगे और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस बेहतर तरीके से समस्याओं के समाधान का कार्य करेंगे। Embracing the nuances of cultural diversity empowers people to take ownership over their past, improve their present, and build a better future for their children. एक और जो महत्वपूर्ण योगदान कल्चरल डाइवर्सिटी का है, it is that cultural diversity promotes inclusive dialogues. Cultural diversity is essential for elevating diverse voices.
Diversity brings unique perspective to our work, helping us to be more thoughtful and empathetic in how we treat people and their history. Cultural diversity encourages creativity and the exchange of ideas, as well as fosters meaningful dialogue around global issues that impact all members of society. Therefore, embracing cultural diversity broadens our mental horizon, making us more sensitive towards issues of global concern. Consequently, enriching our understanding of other cultures, and this definitely helps a nation to grow. So this is one of the most important way by which cultural diversity helps in building a nation. Cultural diversity promotes business. Cultural diversity is important for remaining economically competitive in the global world. Creating a diverse workforce is about more than giving representation to different groups in a society. It enables workers and employers to share an array of experiences and viewpoints that strengthens their work, making them more adaptable to new trends and giving them an advantage over competitors with less breadth of experience. So when the scientists at ICAR, coming from diverse cultural backgrounds, share their experiences with each other, undoubtedly the productivity and quality of the output increases, I'm sure. Cultural diversity creates employment and generates revenue. India, being the hotspot of tourism, attracts tourists from across the globe. And tourism is one of the major industry in India which draws sustenance from rich and diverse cultural heritage. Had India not, been so rich culturally, तो हमारा tourism शायद इतना समृद्ध नहीं होता. As India proudly showcases its rich culture through various fairs and festivals, which are organized to attract tourists, it surely creates employment opportunities for the local artisans and common people, and also generates revenue for the government, which definitely contributes in nation building. Therefore, embracing cultural diversity is a priceless opportunity that elevates poverty, it creates employment opportunities, it empowers communities, it promotes peace, and substantially helps in nation building. अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, how to support cultural diversity? We as Indians, we as citizens, how can we contribute in supporting cultural diversity? क्योंकि हमें पता है कि जब cultural diversity को हम support करेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपना एक छोटा सा प्रयास करेंगे राष्ट्र की संपन्नता, राष्ट्र को संपन्न बनाने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हमारा ये एक छोटा सा कदम होगा, एक छोटा सा योगदान होगा. तो अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, if you're not sure about what are the actions that could be taken, consider some of these ideas. Interact with people outside of your culture. अक्सर क्या होता है, when we are in waiting area of an airport or a railway station, या हम डॉक्टर को विजिट करने गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का, we tend to look for people coming from similar हम अपने ही कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों को तलाशते हैं, उनसे कन्वर्स करने की कोशिश करते हैं. अरे उनसे तो, उस कल्चर से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर है, तो कोशिश कीजिए ऐसे माहौल में जब आपको इस तरह का मौका मिले तो आप अपने से भिन्न कल्चर के जो लोग हैं, अपने से भिन्न संस्कृतियों के जो लोग हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए. क्योंकि निश्चित तौर पे जब आप डायलॉग करते हैं दूसरी संस्कृति के लोगों से, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं दूसरी संस्कृतियों के बारे में, और जब आप सीखते हैं उनके बारे में तो आप उनका सम्मान करते हैं. और देखिए, जब आप उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, तो आपका ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आप जजमेंटल हो. क्योंकि जब हम जजमेंटल होके कोई काम करते हैं तो उससे हमें वो फायदे नहीं मिलते जो मिलने चाहिए. So whenever you are in dialogue with, whenever you are conversing with people outside your culture, be in a receptive mode. ग्रहण करने के मोड में रहिए, उनसे जितना ज्यादा सीख सके उतना ज्यादा सीखिए. And if you come across anyone who is culturally insensitive,
डू स्पीक अगेंस्ट इट, आप उनको रोकिए कि आपको दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करना है। कम से कम इतना तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति कर ही सकता है कि यदि हमारे आसपास कहीं किसी संस्कृति को लेके कुछ गलत कहा जा रहा है तो हम उसे रोकने का प्रयास करें। एक्सेप्ट दैट डिफरेंसेस आर बेनिफिशियल एंड नॉट हार्मफुल। और हमारे लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, उनके फायदे ही होते हैं। बिकॉज दीज कल्चरल डिफरेंसेस, when you are open to these cultural differences, when you are in receptive mode, they help you grow as an individual, as a society, as a nation. तो उसके आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे, तो उससे सीखिए, उससे फायदा उठाइए। डोंट फोर्स योर बिलीव्स ऑन पीपल विथ ऑपोजिंग व्यूज। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर सभी लोग कल्चरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं। सबको ये लगता है कि जो हमारा कल्चर है वही सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी दूसरे कल्चर्स जो उनसे भिन्न होते हैं उनको बड़े डेरोगेटरी नजरों से देखते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ये मानना है कि यहाँ पे कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि हर कल्चर भिन्न है, और उस भिन्नता का, उस डिफरेंस का सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। Advocate to hire people or work with people who are not within your same culture. हम लोगों को जब भी किसी काम के लिए किसी व्यक्ति की तलाश होती है तो फिर हम देखते हैं कि हमारे ही कल्चर से जुड़ा हुआ समान विचारधारा का व्यक्ति हो। लेकिन जब हम थोड़ा अपना दायरा विस्तृत करते हैं तो दूसरे कल्चर के लोगों को भी अपने जीवन में जगह देते हैं, तो उससे निश्चित तौर पे हमारी ग्रोथ होती है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस हेल्प और अ ड्राइवर, डू कंसिडर पीपल बिलोंगिंग टू अदर कल्चर्स। Learn a new language and communicate in a friend's native language rather than your own. भाषा, नई भाषा को सीखना भी सांस्कृतिक आदान प्रदान का या भिन्न संस्कृतियों को जानने का बहुत ही सरल तरीका है। बिकॉज लैंग्वेजेस आर द मिरर्स टू कल्चर। भाषाएं वो दर्पण होती है जिनमें संस्कृतियां परिलक्षित होती हैं। तो नई भाषाएं सीखिए, रीड लिटरेचर एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। और ये तो सबसे आसान तरीका है, कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ लिटरेचर विच इज बेस्ड ऑन कल्चर। और देखिए, अधिकतर साहित्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जिस सांस्कृतिक परिवेश से आया है उसकी कहानियां कहेगा, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। सो व्हेन यू कंज्यूम दैट लिटरेचर, व्हेन यू रीड दैट लिटरेचर, यू डेफिनेटली गेट टू नो दैट कल्चर closely. So reading literature is one way of broadening your outlook towards different cultures that are present around you. Travel the country as much as you can, take part in cultures and understand them from the source. जब भी आप अगली बार कोई ट्रिप प्लान करें, कोई टूर प्लान करें अपने परिवार के साथ, तो ऐसे स्थानों को चुनिए जो सांस्कृतिक विरासत से संपन्न हो। इससे आपका जो संस्कृतियों के प्रति जो ज्ञान है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में आप अपनी जो नई पीढ़ियां हैं उनको भी दूसरे कल्चर्स के प्रति जब आप एक्सपोजर देंगे तो दे विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। Absorb media and art from across the nation. अंतिम है, but this is the most important one. Thanks to social media, it has provided you access to all the cultures that are spread pan India. तो हम कोई भी सोशल मीडिया देख ले, हमें संस्कृतियों के बारे में बहुत सा ज्ञान मिलता है, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, और कई बातें तो इतनी हैरान कर देने वाली होती हैं कि हमें बड़ा आनंद आता है उनको सुन के। तो ये भी एक तरीका हो सकता है दूसरे कल्चर्स को जानने के लिए। और इससे भी महत्वपूर्ण है आर्ट, जो कलाएं हैं दूसरी संस्कृतियों की, उनको अपने जीवन में हमें जगह देनी है। दिवाली पे हम सड़क किनारे बैठे कुम्हार से दिए खरीदें और इससे न सिर्फ हमारी बल्कि उसकी दिवाली भी रोशन हो जाएगी। और खादी के वस्त्र पहन के भी हम फैशन आइकन बन सकते हैं, हम इस बात को स्वीकार करें। बिहार की मधुबनी, महाराष्ट्र की वर्ली, आंध्र प्रदेश की कलमकारी या उड़ीसा के पट्टचित्र से हम अपने घरों की दीवारों को सजाएं। हम
जितनी भी ये सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, जितनी भी कला के रूप हैं, हम उनको अपने जीवन में, अपने घर में, अपने रहन सहन में स्थान दें। ये स्थान जब हम उनको देंगे तो निश्चित तौर पे भारत अपने आप तरक्की करेगा। अगली बार जब हम अपने जन्मदिन पर या अपनी सफलता का आयोजन करने किसी होटल या रेस्टोरेंट जाएं, तो ऐसे देसी व्यंजन ऑर्डर करें जिससे ना सिर्फ स्वाद बट हमारी सेहत भी बढ़ेगी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वास्तव में हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो कदम हैं हमारे, ये राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है, next time when you are juggling with thoughts on what to gift your boss, your friend, your husband, your wife, your relative, or XYZ, consider gifting them a pashmina shawl from Kashmir, or a bandhej sari, or a safa from Rajasthan, a mekhla chadar from Assam, or a Kanjivaram silk from Tamil Nadu. और यदि हम ऐसा करते हैं तो इस सब का एक और जो फायदा होगा, हम जाने अनजाने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल का जो सपना है, हम उसकी चेतना का भी हिस्सा बनेंगे। तो ऐसा कीजिए, ये छोटे छोटे कदम हैं। All these choices, they will surely be small but steady step towards embracing cultural diversity and ensuring our contribution in nation building. So let us all be brand ambassadors of the diverse culture that India fosters and ensure that our contribution in nation building is made. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. I think my video is not showing now. Some problem is there in my laptop. So no issue. Okay. I hope I have kept the time limit also. Yeah, ma'am. Yeah, very nicely you have presented. Very nice presentation on a very beautiful topic, cultural diversity for nation development. Very beautifully presented by very beautiful presenter. So I request all participants, if you have any query, please ask. Ma'am, just can we take one or two queries if anybody has? Sure, sir. Okay. So I request participants, if you have any query, please ask. Good evening, ma'am. Good evening. Madam, very good presentation and very good message you have given through your lecture. Thank you. Generally, we have seen that during to see nowadays IPL is going on. So players for different states are they are playing, but for the financial purposes. But when Indian national team plays, then we feel that our country is playing, or our country is playing for against another country, so our country should win. But in IPL, we did not find such a kind of attachment. So generally, we see that persons from one state or one district, he generally prefers person of his district or his state. He doesn't feel that we are Indians and we should love each other. So there is some integrity or some harmony should be among us as a citizens of India. So what should be our mindset that we should go for apart from cultural diversity, or we should have integrity, more integrity in our hearts. So what can we do for this?
as you have given example of IPL, I think IPL is one of the best example that advocates how beautiful, we have this cultural diversity. Because when we see different teams, no doubt, all the teams, they have their local players, but then we do have Mahendra Singh Dhoni. For years, he has been representing Chennai, and the chief minister has in fact called him Hamara Dattak Putra. So what could be more beautiful than this? And I agree. Yes. मेरा ये देखिए, अगर दिल्ली की टीम खेल रही है तो दिल्ली ही जीते अगर राजस्थान के अगेंस्ट, जबकि इंडिया की टीम अगर जीते तो हम लगता है इंडिया खेल रहा है, इंडिया जीतना चाहिए बस। हाँ, तो देखिए ये स्टेट्स की टीम्स खेल रही तो स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं, हम नहीं चाहते दिल्ली जीते, हम चाहते राजस्थान जीते। डेफिनेटली, देखिए इसका उत्तर मैं आपको देती हूँ। देखिए जितना महत्वपूर्ण है दूसरे कल्चर्स को अपने लाइफ में स्पेस देना, उतना ही महत्वपूर्ण है अपने कल्चर में रूटेड रहना। क्योंकि जब तक हम रूटेड नहीं होंगे अपने कल्चर में, जब तक हम अपने स्वयं के कल्चर का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरे कल्चर का सम्मान कहां से करेंगे? सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। देखिए जब राजस्थान की टीम दिल्ली के खिलाफ खेल रही है, एंड बीइंग अ राजस्थानी, इफ आई सपोर्ट टीम ऑफ राजस्थान, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। प्रॉब्लम तो वहां होती है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होते हैं और मैं चाहती हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीते। तो देखिए नो डाउट एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लेकिन जब वो नेशन का सवाल आता है तब। लेकिन देखिए क्योंकि हम सब अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है वही वास्तव में राष्ट्र से भी जुड़ सकता है। क्योंकि जुड़ाव जो है वो शुरू वहीं से होता है जहां आप पैदा हुए हैं। तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है चीजों का, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, Anyone else? तो भी मैडम कुछ पूछो कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। Actually, we are all overwhelmed by your presentation, madam. It is like listening something from the horse's mouth. And who has, I think you have a PhD on, might be something in social, on the society, I think, something related to that, because you in-depthly understood what it is. Actually, I am a Malayali. We are very much culturally rooted. If you see, it's a very common in southern state. Irrespective of the religion, they have a common language, and they have a food and the culture, and it is much stronger and bonded than many part of India. So we have to teach them to, first you have to be who you are, from you come from. Exactly. Then you have to integrate. When you understand what diversity is and what is the, so you will understand the importance of understanding others, and so we can link better. And we are so much fortunate to be in the ICR. Also, we have a beautiful system, and it is called as AICRP. It is all India Coordinated Research Program on maize. And we are the central coordinating unit of that. And we have, I think, many of our AICRP partners have also joined. And it's, you can see it is from Kashmir to Kanyakumari. Even though in Kerala we don't have a maize, otherwise it would also have been a part of this AICRP. Otherwise, from Tamil Nadu to Kashmir, we have all the colleagues, and we meet once in every April to celebrate our annual maize workshop. And in that time we used to talk. So also because of this AICRP, we have to go to the different parts of the India, and always I used to choose to go to the challenging part. I think many people in the maize, they appreciate that part of AICRP where you can go to another state and monitor our field
trials. So during that location, that time, that host university, they used to treat with us in all aspect of their being their food culture, and also they take special care to show us some culturally diverse or some culturally rich part of that particular state. So we are a true diverse organization, especially IAMR. Thank you so much for your talk, and your talk embodied what we advocate and what we hold for. Thank you. Thank you, ma'am. Your words mean a lot to me. Indeed, I'm a daughter of diverse cultures. You know, you said how this was coming. My father, since he was in a transferable job, so not biologically, but by upbringing, I have been to different parts of India. I have known a little culture of yours also. I have a few Malayali friends also. I have been to Bangalore. I lived for some years in Bangalore, in Punjab as well as in Chandigarh, Allahabad, and Northeast also. We were in Johrat for a couple of years, and of course Rajasthan, where I belong to, where my roots are. So this, you know, exposure has made me what I am. And you know, it is actually this exposure, as you talked about, that, you know, when you have the first-hand experience of all the diverse culture, what it has to offer, the cuisine, only then you get to know what India is. It certainly broadens your perspective on everything. You become a better human being, a better citizen, and you definitely contribute in nation building. Thank you. Shankar, you may also speak. Actually, Shankar is also one person who was prompting me to speak. He also appreciates culture. Actually, one thing befitting reply from me. Vegetarian madam. Actually, when she went to Kerala, we were in Kerala, ma'am, it was almost 100% non-vegetarian. We went for some program. When they served chicken, he told it's okay. I felt so good, and even though because it's not forcing, but he himself accepted that diversity. We went for the introduction of the maize in the Kerala, and we were successfully able to do that. And now madam is happy to see that. So I have also enjoyed the cultural diversity of the country and visited almost all the states of the country by bless of the maize program. So thank you to the maize program, and thank you madam for your very nice talk. Thank you Dr. Subbi for speaking on behalf of me. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Yes, madam, you have very nicely presented. Now I request our director in charge to give the concluding remarks on the presentation today's event. Thank you, Daglaji. I'm audible. Yes, sir. So thank you, madam, for giving very on cultural diversity. First of all, madam, I would like to say that in our ICR system, since our Institute of Maize Research, and all scientists from different states, like UP, West Bengal, then Andhra Pradesh, diverse, states, different scientists are working together. So your cultural diversity, not only in our institute, but in all ICR institutes, this cultural diversity is maintained. And at the same time, as Subi has mentioned, that this Indian Institute of having a program. So almost 26 to 27 states from Kashmir, all states we are traveling for our at least once in a year. So whatsoever the cultural diversity, whatsoever the language diversity,
all is taken care of. So thank you, madam, for giving such a comprehensive lecture. And you have rightly mentioned that at every 1 mile there is change of water, and every 4 miles there is a change of language. So that diversity is maintained, and our country is still is very much united. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you for your concluding remarks. Now, I would like to present a vote of thanks. This is also a part of the culture in these events. Respected director, sir, my seniors and colleagues, I feel proud to express my heartfelt thanks to all those who have made this event possible and successful. I would like to start by thanking our director, sir, for providing guidance and necessary requirements for the celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav event series. And he has always been supportive and encouraged us to strive the excellence. I am highly thankful to Dr. Santosh Kamar Shekhawat, today's speaker, who has given an excellent presentation on cultural diversity for nation building. Madam, actually, we are working on agriculture. So on the name of culture, we deeply know only agriculture. And so I am very thankful to you to provide glimpses of different cultures which are present in our nation. And definitely you have made us understand that cultural diversity and is a unique identity of the nation. Nation doesn't mean only the geographic boundaries. It is also, it includes also cultural food and all kinds of diversity, and how it is very important for the human life. So we always accept the diversity by our heart, enjoy the diversity. So thank you, ma'am, for your beautiful presentation. I am also thankful to Dr. Roman Sharma, who has been helping to organize the series of events under this Azadi Ka Amrit Mahotsav. I am grateful to all who have contributed directly and indirectly to make the event successful. At last, I am thankful to all the participants from this institute as well as its regional stations and different AICRP centers. And thank you all. And thank you very much, ma'am. Thank you.